Hello and welcome. You're watching the special broadcast. I'm Anusha Soni. Our top focus this hour continues to be the war in West Asia. As the war between Israel and Hamas continues, French President Emmanuel Macron is in Tel Aviv for the solidarity visit. Macron met Prime Minister Netanyahu and assured the support of France to Israel. Netanyahu has also reiterated that elimination of Hamas is their main objective. Israeli Defense Minister said that Israel is preparing for a multilateral operation on Hamas from air, ground and also sea. UN General Assembly will discuss the Israel-Hamas conflict on October 26th. As the humanitarian crisis in Gaza continues, 20 more trucks carrying vital humanitarian aid passed the Rafah crossing from Egypt into Gaza on Monday. Meanwhile, UK Prime Minister Rishi Sunak said that explosion at Gaza hospital was likely caused by a missile launch from within Gaza towards Israel. There is a battle here between the axis of evil led by Iran, Hezbollah, Hamas, Houthis, and there's the axis of the free world and the moderates who want to bring the world to the progress and prosperity of the 21st century. This is the battle. It's engaged now. The test for the West and for civilization is Hamas. If Hamas emerges victorious, we will all lose. Europe will be endangered. Everyone will be endangered. Civilization will be endangered. So if Hamas wins, if Hamas loses and is defeated, then the forces of civilization win. That is why this battle is not merely our own. It's Europe's battle. It's America's battle. It's civilization's battle. It's the battle for the heart and soul and the future of the Middle East and the Arab world. I want to thank you, Mr. Prime Minister, not just for your time, but because I'm lucid about the fact that this fight against terrorism is obviously a matter of existence for Israel, but it's a matter of existence for all of us. This is why we discussed together, and I just reminded this issue, but I consider that this is an international coalition in order to fight against these terrorist groups that we have to build. I just reminded my people in my language what we discussed about fight against terrorism, humanitarian action, rules to be respected, but as well political process. And obviously I warned against any escalation, and I want Hezbollah and some other regimes not to be part of what's happening. All right, let's get you some more information. The latest updates coming in on the war. Israel is preparing for a multilateral operation against Hamas. Now, Israel preparing for this multilateral operation, what does it mean? The IDF soldiers are conducting training exercises, and as it was earlier argued, the Western Bloc has completely given its support to the country of Israel. You have the French President, UK Prime Minister and US President coming forward and making similar pitches. Not just that, there are warships, fighter jets that have been deployed. Macron has reassured military aid and support to Israel. That's what he has done. Israel has called for release of more hostages from Hamas. Some releases have been done, but yet there are many who are in custody. And the European Union's humanitarian aid for Gaza is also something which is slowly reaching. There have been blockades. That has been a huge problem and a huge point of concern. Let's tell you more about this crisis and what exactly is happening. Hamas has released 2 Israeli women hostages. 54 relief trucks have also reached Gaza since Saturday. What are the updates coming in? There are fuel shortages that threaten hospitals across Gaza. Patients who are dying in Gaza, unfortunately, because of shortages of power. Search for missing under rubble, that continues. That's a concern. Over 500,000 internally displaced in Gaza. That's what United Nations has said. And families in Gaza continue to bury children killed in strikes. Unfortunate reality. Families are forced to flee Gaza city amidst bombing. They've been asked to go from the northern part to the southern part. And families are forced to flee Gaza, the city amidst bombing, which is happening. And bombing has also happened in multiple parts, which are civilian dominated, some of them hospitals. That's a point of concern. We get you some international reports. Hamas late last evening released 2 elderly Israeli hostages. This happens days after the Palestinian group fired different attacks that had happened in the Gaza city and in Israel. They had also freed 2 American nationals. Now, the hostage crisis is something that has been the center boiling point between Hamas and Israel, with Israel saying that the offensive will continue till the hostages are free. Take a look at this report. שמחתי לראות 2 נשים שהגיעו אלינו חזרה
I was happy to see two women who arrived back with us, all in good condition, very emotional and happy. I felt that it was a great privilege to stand and see and greet these two women. We took them to the ward where they met their families. There was great happiness, many tears, a lot of crying. They are amazing people. We get you some exclusive conversation from the poll-bound state of Madhya Pradesh, the battle of prestige. It is one of the key states which will go for elections next month. CNN News 18 spoke to Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, who's confident that BJP is winning the upcoming assembly polls and he will retain his seat. Listen in. सबसे पहली बात यह है लाडली बहन योजना, इसके बारे में बहुत चर्चा में है। चुनाव का बीच में यह है, क्या आपको लगता है कि महिलाएं ही आपका नैया पार कराएंगी इस बार? देखिए, लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो, ये हमने कभी चुनाव को देख के नहीं बनाई। हमने जब लाडली लक्ष्मी बनाई थी तब चुनाव नहीं थे, 2006 में बनाई मैंने। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद दो योजनाएं मैंने बनाई थी, एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह और दूसरी मैंने बनाई थी लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटी को बोझ समझा जाता था और मेरे मन में एक बोझ था कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और ये भाषण से नहीं होगा, अगर बेटी आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, शादी में पैसे खर्च ना करना पड़े, क्योंकि कई बार शादी में दहेज देना पड़ेगा, इसलिए बेटी नहीं आए, बेटी आए। बेटी बोझ नहीं वरदान है, इस भाव से हमने लाडली लक्ष्मी बनाई, कन्या विवाह योजना बनाई और बाद में वो योजनाएं इतनी पॉपुलर हुई कि हर एक राज्य ने किसी न किसी रूप में लाडली लक्ष्मी योजना को बनाया। दो चीजें यहां हैं, महिला आरक्षण बिल, क्या आप खासतौर पर उसकी समर्थन तो करते हैं, लेकिन अब जैसे कांग्रेस कह रही है कि उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या आप उस बात से सहमत है? दूसरा, जो कांग्रेस कह रही है कि आप बहुत फ्रीबीज अनाउंस कर रहे हैं, पैसा कहां से लाओगे, पैसा नहीं दे पाओगे? मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये आधी आबादी को पूरा न्याय दिया है। हमारी बहनें आज भी आप देखिए कितनी पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, कितनी असेंबली में पहुंचती है। महिला कितना भी कहते रहे, कितनी बहनें पहुंच पाती, कितनों को टिकट मिलते हैं। ये तभी सुनिश्चित होगा उनका पार्टिसिपेशन जब आप उनको आरक्षण देंगे। इसलिए कदम बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए अभिनंदन। दूसरी चीज, फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश को आप पूरा देख लीजिए। हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो बजट था 21,000 करोड़, आज 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है, 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें। और कमलनाथ जी की सरकार आई थी कुछ दिनों के लिए, उन्होंने बहुत सारे आपके स्कीम को भी बंद कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले देखिए एक योजना, ये कमलनाथ जी से सवाल पूछा जाना चाहिए, मैं रोज पूछता हूं, बेगा भारिया शहरिया, ये अत्यंत पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अलग अलग योजना कुपोषण दूर करने के लिए बनाते हैं, रेडी टू ईट दे दो बच्चों के, तो मैंने कहा मां के हाथ में पैसा दे दो। अगर मां के हाथ में पैसा चला गया तो बाकी काम वो अपने आप कर लेगी, मां कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। तो तीनों जो समुदाय सबसे पिछड़े थे उनकी बहनों को हमने 1,000 रुपये महीना देना शुरू किया और बाद में हमने इंपैक्ट असेसमेंट करवाया तो घर में पोषण की हालत बच्चों की ठीक हो गई, पोषण का स्तर सुधर गया, क्योंकि मां ने पैसा इधर उधर नहीं किया, सबसे पहले बच्चे पे खर्च किया। मैंने आपका कन्या पूजन देखा था, जहां पे आप हर साल करते हैं ये, लेकिन उसको एक राजनीतिक रंग दिया गया, जहां पे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आप एक नौटंकी कर रहे हैं। आपको बुरा लगा ये सुन? मुझे मतलब अंतरात्मा पे जैसे चोट की हो किसी ने। देखिए हर चीज में राजनीति करना चाहिए क्या? कन्या विवाह भारत के हर घर, कन्या पूजन भारत के हर घर की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे ऋषियों ने गाया कि जब बहन और बेटी का सम्मान नहीं होगा, वहां भगवान भी नहीं रहेंगे, देवता भी नहीं रहेंगे, तो उनकी इज्जत करो। ये सनातन संस्कृति है हमारी, और उसी के अनुरूप मैं तो रोज बेटियों का पूजन मंच पे ही करता हूं, बिना बेटियों के पूजन के कोई काम ही शुरू नहीं करता मैं। और वो भी मैसेज है समाज को कि मुख्यमंत्री सम्मान कर रहा है, आप भी करो, इज्जत सम्मान करो, स्थान दो उनको। उसी परंपरा का मैं पालन कर रहा था। हर साल करते हैं, पहली बार नहीं करते, हर घर कर रहा है, हर मोहल्ले में हो रहे हैं। अब आप इतने घटिया स्तर पे उतरोगे कि उसको नाटक और नौटंकी बनाओगे। मतलब भारतीय सनातन संस्कृति नाटक और नौटंकी कह रहे हो आप दिग्विजय सिंह जी? आप इतने घटिया स्तर पे उतरेंगे
कि बेटी की पूजन पे भी आप ऐसी टिप्पणियां करेंगे कि वो तो नाटक नौटंकी करता है। ये मानसिकता मैं बदलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वो हैं जो बहन और बेटियों को किस दृष्टि से देखते हैं। आप टंचमाल कहते हैं, आपके नेता आइटम कहते हैं, ये इस तरह के, अब इसी मानसिकता को तो मैं बदलना चाहता हूं। Let's talk about the air quality in the national capital. Winter is at the doorstep of Delhi NCR, and so is smog and pollutants. And it seems that mass would be the norm very soon. Here in the national capital, the air quality has worsened to the very poor category. The graded response action plan, which was devised by Special Authority EPCA set by the Supreme Court, Stage 2 has been invoked here in NCR. Delhi Environment Minister Gopal Rai informed about the most affected locations due to the bad air quality and said that the government will depute special teams to identify and inspect the local sources of pollution. The development comes as the time when the Delhi government and other weather-related bodies, they expect the air quality to worsen in the upcoming days if the history is to go by for the last few years. BJP has attacked the Aam Aadmi Party and demanded answers as to why they could not do anything even after forming a government in the state of Punjab, where stubble burning is a key issue. Here is a report. As the AQI levels are expected to increase during winters, it is important to recognize that adequate precautions are taken so that the ill effects of air pollution are minimal. The vulnerable population should be identified, and the people who have got underlying lung disease like asthma, COPD, or chronic lung ailments, they are more prone to the ill effects of air pollution. Also, people who have got underlying cardiovascular disease like previous heart attacks or underlying coronary artery disease, people who are diabetics, or any immunosuppressive illness, these are the patients who are very prone to the ill effects of air pollution. Well, Prime Minister Narendra Modi attended the celebratory burning of Ravan's effigy on the occasion of Vijay Dashmi at Delhi's Ram Leela Maidan in Dwarka. Prime Minister was given a traditional welcome by the organisers on the dais at the venue, a shawl, a statue of Ram Darbar and a mace. He also touched upon Ram Temple in Ayodhya, the construction of which is underway. He also said that his generation is fortunate to see the construction of a temple after a long wait. Prime Minister further said that next year's Ram Navami will be celebrated with the new temple in Ayodhya. आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। Well, there were scenes that came out in Srinagar as well. There was a Shobha Yatra that was carried out after a very long time in the heart of Srinagar by the Kashmiri Pandits on the auspicious occasion of Vijay Dashmi.
After 34 years and since 1989 when the militancy erupted in Kashmir Valley, for the first time Shobha Yatra was taken out in Srinagar. You can see behind me on the auspicious day of Dussehra, many of them dressed in religious attire are moving here, and now what will happen after this will be that this effigy of Ravan will be lit and set on fire. These programs hasn't seen a larger participation like we are seeing today here in Srinagar since the time of militancy. But now many people are coming out, including paramilitary forces, Kashmiri Pandits, Hindus, and people who are working in Kashmir, including Kashmiri Pandits who are working under PM package, and coming out to participate in these important religious functions which at once had come to a grinding halt. But now after 89, the Shobha Yatra, and now this particular day of celebrated Dussehra is something where many Kashmiri Hindus are coming out and celebrating this day. हम कश्मीरियों को, चाहे वो irrespective of religion, हिंदू है, कश्मीरी है, सिख है, हम कश्मीरियों को बदनाम करने की हर जगह एक आदत बन गई, एक हैबिट बन गई है. तो मैं समझता हूँ ऐसे जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स एक चीज दर्शाती है कि जैसा हम कश्मीरियों को प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं या एक दूसरे के हमेशा को मार तोलने में ही लगे हुए हैं, ये इवेंट्स दर्शाते हैं कि नहीं, ऐसी बात सच्चाई नहीं है. एक तबका हर माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक तबका गलत होता है. उस गलत तबके के अगेंस्ट हजारों लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो हैं उस लड़ाई के साथ है, उस गलत को गलत बोलने के अंदर हमारे साथ हैं, और उनकी जो शमूलियत है वो इस चीज़ को दर्शाती है. तो मैं समझता हूँ जैसे ही ये रावण दहन हो जाएगा, इसकी जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जो जीत का एक मैसेज है, वैसे ही बुराई के ऊपर जितनी अच्छाई की जीत ये कश्मीर में भी हो, बुराइयों का यहाँ से निजात हमें मिले. Across the country, there were celebrations. CNN News 18's Vinaya gets you this ground report from Uddhav Thackeray's Dussehra Mela in Mumbai. Take a look. We are here at Shivaji Park and it's a standoff between Shiv Sena's two factions. It's Eknath Shinde versus Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray's UBT Shiv Sena is sure to have a full-blown show of strength here. Within hours, Uddhav Thackeray is to address a rally here, and as you can see, there's a lot of excitement. We are seeing Shiv Sainiks who have come from different areas here in order to show their support to Uddhav Thackeray. Let's try and get a word from each one of them. आप किधर से आए हो? आपने ये मुस्लिम मावड़ा गले में पहना है, क्यों इतना बड़ा पहना आपने? ये हमारे सामने दीवा नाम है, हमारे कुटुंब प्रमुख श्री उद्धव साहब ठाकरे ने हमें नाम दिया है. मैं संघ में शहर जिला अहमदनगर अजीज मोमिन मुस्लिम मावड़ा, अक्के महाराष्ट्र में एक मावड़ा मुस्लिम मावड़ा. और यहाँ पे आने का सबसे और बड़ा कारण यही है कि आज हमारे साहब की, हमारे कुटुंब प्रमुख की दसरा मेड़ावे की सभा है, और ये सभा में यकीनन मानो गद्दारों की धज्जियां उड़ा देंगे मेरे साहब. This person who has come from Nagar, let me show you. Not just are they carrying the saffron flags, but here he is wearing this whole thing where it says आदेश फक्त उद्धव साहेबांचा 2024 मध्ये महाराष्ट्र विकणाऱ्या कलंकित गद्दारांना काढून टाकू. This means that it's only Uddhav Saheb's आदेश or orders that will work, and we will make sure to decimate all those who did gaddari. Well, with that, it's a wrap on this edition of CNN News 18. Thank you so much for watching. But once again, wishing all our viewers a very happy Vijay Dashmi, leaving you with these visuals of how the festival was celebrated across the country. Jai Jai Shri Ram!
יפה בליפשיץ. כמה לי? 85. What's your name? It's okay, let's go. It's okay, let's go. Yes. You go with this one. שלום. שלום. Okay. You go with this lady. Okay. أيضا مزدوج كجنسية هاتين المحتجزتين. الجزء الأول من المعنى هو أنه هناك جهود تبذل مع جميع الأطراف. صحيح. وأنه هذه الجهود لها ثمار. هذه ثمرة من ثمار هذه الجهود. هذا نابع من الثقة التي بنتها صحيح. القاهرة على مدار سنوات وعقود بالمناسبة محمد، يعني هذا ليس وليد الأزمة ولا وليد الأحداث والتطورات، هذا هو الدور التاريخي المصري الذي القاهرة اطلعت به وحملته على عاتقها طوال عقود طويلة يكافح فيها الشعب الفلسطيني وعدم قطع دخولهما إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح. لكن المعنى الآخر الأكثر أهمية في رأيي من كل ذلك أنه هناك ثمار تجنى، هذه الثمار يمكن استغلالها طبعا لإقناع الطرف. الدماء الآن في المشهد الذي نتابعه، المشهد صحيح. شديد الإيلام، لإقناعه بأنه يعني عليه أن يهدئ من روعه بعض الشيء. وبالمناسبة أتوقع أن يكون هناك جولات أخرى من جولات الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، خاصة في ظل الضغط الذي يواجه رئيس الحكومة نتنياهو. مصر تقرأ المشهد بشكل كبير، وبالتالي الحق في الحياة والحق أيضا في أن يكون. كان قد تم احتجازهما في قطاع غزة منذ بدء الأزمة إلى الدولة المصرية من خلال النجاح في الإفراج عن هاتين السيدتين المدنيتين بعد وصولهما إلى الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري. مصطفى، شكرا جزيلا لك. مصطفى عبد الفتاح، موفد القاهرة الإخبارية عند الجانب المصري من معبر رفح البري. إذن رغدة، وكما تابعنا في نقل حصري لوصول المحتجزتين إلى الأراضي المصرية، حماية المدنيين لا تقتصر فقط الرؤية المصرية فيه على المدنيين من الفلسطينيين. مصر أيضا بكل هذا الدور الذي تطلع به أيضا من منطق إنساني، هي لا تفرق، يعني كل الدم حرام بالنسبة للرؤية المصرية، وبالتالي هاتان إسرائيليتان الآن تنجح الجهود المصرية في الإفراج عنهم اللازمة. دعنا نشير محمد إلى أن التفاوض في مثل هذه الظروف يكون بالغ الصعوبة، وهذا طبعا يرشح لأن الجهود المصرية كانت مكثفة وعملت على مسارات متزاوية يعني متزامنة ومتوازنة بشكل كبير ما بين كل الأطراف للوصول إلى هذه اللحظة بوصول سيدتين إسرائيليتين محتجزتين، كانتا محتجزتين في قطاع غزة والآن هم في الأراضي المصرية. ينحو تدريجيا نحو فكرة أن هناك طرفا آخر داس عادة ولا يستعمله الدبلوماسيون، يقولون مثلا نرحب به، ولكن هذا التعبير يدل بالفعل على أن الولايات المتحدة ترى في ذلك مؤشرا جيدا عن ذلك بشكل صريح، ولكن هناك طلبات أمريكية أو استعملت وسائل الإعلام الأمريكية لفظ نصائح أمريكية. We are very emotional and happy of the formal announcement that my grandmother Yocheved Lifshitz and Nurit Cooper, both of them from Kibbutz Nir Oz, are coming back to us due to a humanitarian act. And I'm very excited as we all are here expecting them and expecting more improvements to all of the captives from our kibbutz and in general, and we just hope that she is okay and in good health. We will go see her now. I know she crossed in the Red Cross vehicle from Hamas, then crossed the Rafah border in the Egyptian side, and now she's supposed to cross over to us to the Israeli side.
ואנחנו ממש 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 בקרוב מחכים לראות אותה. They talked to her and she spoke, and very soon we will see her, meet her, and unite with her. And we hope that this will open a door for the rest of the captives to be released, which is most important, even more than their release. זה רק פתח והמשך. Madhya Pradesh is called the Dil of India, and both the BJP and the Congress are working overtime to ensure that they win the Dil of the voters. For the BJP, it hopes that it's going to be a challenging election otherwise, but the Shivraj Singh Chauhan plus the Modi charisma plus Nari Shakti can actually click for them. But for the Congress, it's a do or die chance. This has to ensure that for once Kamal Nath Sarkar ticks. And therefore, the successful Himachal Pradesh plus the Karnataka formula is being applied, which is freebies, cylinders and woman power. Over the next half hour, I'm going to be discussing whether the change political strategy plus cylinders plus Nari Shakti can click for either of the two parties. आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। जन कल्याण की योजना तो ऐसी कि मैं हमेशा कहता हूं, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते। झूठे वायदे, झूठे घोषणाओं से मध्य प्रदेश की जनता अब थक गई है। As both the Congress and the BJP woo women voters, what is it that's on the minds of Madhya Pradesh's women? For Sarpanch Krishna Rawat, the walk from her home to the Panchayat is a short one, but it's a long stride for the empowerment of women. In poll-bound Madhya Pradesh, 50% of the seats in Gram Panchayats are reserved for women. Yet until recently, there were very few takers, or it was the men who were actually pulling the strings. But these women are not going to put up with that anymore. The winds of change are here. आपको क्यों लगा कि आपको ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ना चाहिए? पहली बात तो आज तक कोई महिला मतलब सरपंची में कोई खड़ी भी नहीं हुई है, तो सोचा क्यों ना मतलब मैं खड़ी हूँ। और इस मतलब जो भैया हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए, उन्होंने मतलब मेरे को खड़ा करने की सोचा। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, शुरू में मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि मैं कैसे करूंगी, पर सब हो गया। तो आप इसके अलावा क्या करती थी पहले? मतलब घर में थी, घर का काम करती थी? घर में काम करती थी। अभी मेरी 2 साल पहले ही शादी हुई है, तो हाउस वाइफ थी। तो ये आप जब ग्राम पंचायत बनी तब आपकी शादी हो चुकी थी कि शादी होने वाली थी? शादी हो चुकी थी। हाँ, हो चुकी थी। अच्छा, तो बेसिकली ससुराल से आपको सपोर्ट मिला इस काम को लेके। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, जब आपका काम तो यही होगा ना लोगों का प्रॉब्लम सुलझाना, तो उसमें लड़के भी आते होंगे, जेंट्स भी आते होंगे, वो लोग ये नहीं सोचते कि महिला के पास हम क्यों जाएं प्रॉब्लम सॉल्व करने? एक तो सबको बैठा के ये सब डिसीजन लिया है कि महिला को खड़ी किया जाए, मतलब क्यों ना अपनी मतलब अपने घर में से ही किसी को मतलब सरपंची में खड़ा करे, तो उनको ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब इश्यू नहीं है कि इसको बताना है कि नहीं बताना है। सब अपना खुल के प्रॉब्लम बताते हैं और सब बैठ के उसको सॉल्व करते हैं। तो लड़के आते हैं आपका प्रॉब्लम लेके आपके पास? बिल्कुल आते हैं। सुनते हैं आपकी बात? सुनते हैं। ये नहीं कहते कि महिला की बात? सब लोग बैठ के चर्चा करते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल भी करते हैं जो भी परेशानी है। अच्छा, इस समय अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, सबने बहुत बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। किसी ने कहा है कि बैंक के खाते में हम पैसा सीधा डालेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे, उसके लिए सब्सिडी देंगे, और एक वुमन महिला आरक्षण बिल की भी बात होती है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी मौसम है कि चुनाव के समय ही महिलाओं को याद किया जाता है,
लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं, या आपको लगता है ये अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है? ये बहुत अच्छी बात है ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो ये इस पे एम्फेसिस डालना चाह रही है कि महिलाएं आगे बढ़े, उनका सशक्तिकरण हो और उनका पूर्ण तरीके से विकास हो। तो लेकिन इस चुनाव के टाइम पे सिलेंडर सस्ता करना, खाते में पैसा डालना, आपको लगता है ये अच्छी बात है कि सिर्फ चुनाव के चलते किया गया है? मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो सब प्रलोभन देना है। कुछ अगर करना ही है महिला के लिए कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं रहा है, कर रहे हैं। लेकिन ये तो अब ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं 400 में सिलेंडर, कमलनाथ बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपये महीने देंगे। मतलब ये तो कुल मिला के प्रलोभन टाइप का दे रहे हैं। तो आप इस प्रलोभन के झांसे में आते हो कि अपने दिमाग में जो आता है वही मैं करूंगी, वही वोट दूंगी? नहीं, जो मुझे लगेगा मैं उसको वोट दूंगी। लोग ये भी कहते हैं कि जो परिवार में जो जेंट्स है वो बताते कि कहाँ पे आपको वोट देना है। ऐसा नहीं है ना, आप लोग अपना मत हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, जिसकी जहाँ इच्छा हुई वहाँ वोट। तो आप बताते हो मैं किसको वोट देने जा रही हूँ? जी मैडम, ये मेरा अधिकार है, मैं अपनी इच्छा से। आप लोग भी अपने मन से वोट देते हो कि आपको जहाँ बोला जाता है वहाँ वोट देते हो? अरे अब मैं ग्राम पंचायत की बात करूँ, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि असली पावर महिला पंचायत के पास नहीं होता है, फैसले असल माने में जेंट्स लेता है। जैसे कि अगर अपने हस्बैंड ने लिया, अपने भाई ने लिया, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी राज्यों में भी है कि जो महिला पंचायत बन तो जाती है लेकिन कागज पे उसको कोई फैसला लेने का हक नहीं बनता। अक्सर वो लोग ऑफिस ही नहीं जाते हैं। क्या ऐसा है आपके साथ कि आप अपना फैसला लेते हो, आप सुनते नहीं हो किसी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी फ्रीडम है, जो भी मतलब साइन वाइन है सब देखना पढ़ना सब मैं ही करती हूँ। आपको किसी को पूछते नहीं हो? नहीं, किसी को नहीं पूछते। अब आप क्या चाहते हो अपनी सरकार से? हम क्या चाहेंगे मैडम, कभी घर मकान की कुटी मिली नहीं, कुछ हुआ नहीं गांव में, तो अब क्या चाहेंगे? अब क्या चाहेंगे? बच्चों की, महिलाएं, लड़कियों की स्कूल जाने की बात हो रही है। बहुत बच्चों के लिए बोला जा रहा है कि हम अकाउंट पे पैसा डालेंगे ताकि लड़कियां स्कूल जाके पढ़ पाए। आपको लगता है कि लड़कियों की पढ़ाई सबसे जरूरी है अगर वो अपना सुरक्षा कर पाए? जरूरी है उनको पढ़ाई में तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, शादी तो देना है। नहीं भाई, उनके पाँव पे खड़ी हो और अच्छे से। आप ये बात मानते हो? कभी आपको ये लगा है कि काश मैं भी पढ़ सकती थी? और सोचते ना कि हम भी पढ़े लिखे होते तो हम भी जॉब करते। If the reservation for women in local polls has kindled the fire of women empowerment, then the Ujjwala scheme has ensured that the smoke from the rudimentary style of cooking also adds to their power. Sundari Devi loves to cook, but it was at the cost of her health. The smoke which struggled to escape from the roof also filled the room, taking a toll on her health. But that's not the case anymore. This is the kind of book which gives to a power of woman empowerment as far as this woman is concerned, and it certainly has been one of the most winning scheme for the BJP, which is also called, of course, as we know, the Ujjwala scheme, not just restricted to the battleground state of Madhya Pradesh, but also to the other states as well. And therefore, this is something which the BJP is going to use very strongly to its advantage, but the Congress, of course, is not going to lag behind in the game, which is why they're also offering a subsidy as far as the cylinder is gone. So the cylinder becomes a huge electoral slogan in the battle for the states. Under the Ujjwala scheme, women were given gas cylinders and stoves. But in some cases, the price of cylinders hindered its generous use. Ahead of elections, both the Congress and the BJP have announced LPG subsidies. For the BJP, it's 450 rupees a cylinder. For the Congress, it's 500 rupees. This comes at a whopping price to the exchequer, but for now, no one is complaining. ये सिलेंडर जो अभी आपके यहाँ लगा है, इसके पहले आप कैसे खाना बनाती थी? चूल्हे पे? चूल्हे पे बनाती थी। अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ है? इससे ये फायदा हुआ है कि हमें धुएं से फायदा हुआ है, लकड़ी कंडे की परेशानी मिट गई। तो लकड़ी लेने कौन जाता था, आप ही जाती थी? नहीं, हमारे हस्बैंड जाती थी, बाजार से खरीद के लाते थे, हमारे पास नहीं कुछ। तो उसमें भी तो टाइम लगता होगा ना जाके? ना, गैस पे सुविधा हो गई, धुआं नहीं लगे, लकड़ी कंडे खरीदने नहीं पड़े। लेकिन सिलेंडर